munchkins, am I live? Please let me know super quick and then we will begin our session. Also, in today's session, we have to just discuss the question answers of the part 1 of the Sound of Music. So this is going to be a very short and very crisp session. Alright, and I hope you're prepared for a short and crisp session. Hello Rano, welcome to the session. Rano, you're in 10th class or you're in 9th class? And so thoughtful of you to attend our session today. Hello Narayan, good evening. Yes, Rano, students will be joining in a while, I guess, or I think in 5 to 7 minutes. Hello Abha. Abha is back in the 9th session again. Abha does this every day. Either Abha loves me too much or she just loves to reread 9th class and she misses her 9th class somehow. Right Abha? What is your reason? Tell me. And also today's session is going to be super short and super crisp because we only have like about 5 questions to discuss. I don't even know why I created a whole session for this. I should have just discussed this yesterday and then we could have been done with the Sound of Music altogether with part 1. But yeah, I did not pay attention to that and now we're stuck with these 5 questions and we have like about like max to max the session would go on for like 20 minutes. So yeah. No Mehak, no Menti. Oh my god, why are people so crazy about the Menti? Why do they not want to study? फिर Menti में आंसर तो देते नहीं है. पॉइंट क्या है Menti लेने का? Give me one single point. Menti लेने का. Okay. All right. So, मैम ये चैप्टर पढ़ा हुआ है. अच्छा महक, बढ़िया. Hello Ruhani. So all the students who know this chapter, who know the answers to all the questions in today's class, I would love it if you guys will help me out with the answers and if you guys can tell me your suggestions and if you have already some answers written for these questions, because this is going to be a discussion session and I would love it if it were a discussion session in the honesty of all of it. Okay, so let's make it as much of a discussion session as possible. You can ask any doubts that you have. You can prompt any doubts and I will answer all the doubts. Tanishka, you had a doubt, so I would like to begin the class with answering your doubt. Let me know what is your doubt so that I can answer it. Hello Pooja. Hello Ansh. Abha, okay. Thali, got it. Yes Tanishka. Hello Jyotsna Bharadwaj. मैम 10th की सेशन का टाइम चेंज हुआ है. येस रानो, 10th की सेशन का टाइम 3 बजे होता है एंड आई एम थिंकिंग ऑफ चेंजिंग इट, बट एक्चुअली देर इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम. I was thinking of changing it to 8 p.m. but I think Manisha ma'am has started taking sessions at 8 p.m. So we are stuck with 6 p.m. or we can make it like 1 p.m. So I mean, I don't know whether students will be comfortable with 1 p.m. because I think most of you have your school classes, school online classes. So I'm not really sure that 1 p.m. is going to work out with you all. So I'll have to discuss the time again with you. Miss Abha is not here. Okay Abha, got it. I mean, okay Miss Abha. Is it possible at 5 p.m.? Rano, at 5 p.m. Manisha ma'am takes session again. So Manisha ma'am and my time kind of clashing together. How old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? Ma'am, the answer can be 17 or 16. Okay, Tanishka, I don't really think that, wait, I think this has been answered in the chapter. Give me 1 second. Yes, she was 17 years old. So the answer is here, if you see. It's written here, Tanisha, that, okay, wait, let me choose pen. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. So she was definitely 17 years old when she went to this Royal Academy of Music. Alright, Anisha?
Obviously. Okay. Haha, Ankit, for you, not for the other students. Yes, Josna, what is your doubt? Am I speaking? No, I am not. Uh, Narayan, actually, Manisha ma'am has some restrictions. She cannot take sessions before 4 p.m. So, yeah, we're kind of in a conversation, but then it's been a problem. Abha, the class will end in about like 20 minutes or so. But when she went for the test, she was 16. Tanisha, which test are you talking about? See, when you're talking about Royal Academy of Music, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो 17 years में थी जब वो first day गई थी, ठीक है? Okay, at what age she became fully deaf? Right. We'll answer these questions. ये questions हैं आगे, don't worry. And 6 p.m. 9th. Okay, 4 p.m. 10th and 6 p.m. 9th. Okay, so 4 p.m. I think Abhishek sir has a session at 4 p.m. and then he has a session at 2 p.m. So he cannot take the 3 p.m. slot. So that would clash. Audition ma'am. तनिष्का, ऑडिशन की बात तो यहाँ पर कहीं नहीं करी है. टेल मी वेयर डिड दे टॉक अबाउट ऑडिशन. अगर उन्होंने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के ऑडिशन की बात करी है देन वी कैन थिंक अबाउट इट. ठीक है आभा. राइट अंकित मैम, 10th का सेशन ही मत लो. यार आनो जरूर. 10th के सारे बच्चों ने मेरा गला पकड़ के ना मेरे को भूत बना देना और फिर मैंने सबको आके डराना है इफ आई स्टॉप टेकिंग 10 सेशंस कंप्लीटली, आई टेल यू. चलो ओके, विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स, डोंट वरी. अभी आप लोग अपने डाउट्स 2 मिनट अपने पास रखो. हम लोग जल्दी से एक बार अनअकैडमी के जो न्यू ऑफर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं. एंड अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जिसके बारे में आप सब लोगों को पता होना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं. सो आप लोग बच्चा पहले तो सबसे पहले ये जो टेलीग्राम चैनल है सब बच्चा पार्टी, इसको ज्वाइन कर लो. आई होप तुम लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा हो, बट अगर किसी ने नहीं ज्वाइन किया है तो कर लो यार. यहाँ पर मैं अपने सारे सेशंस का इंफॉर्मेशन देती हूँ, प्लस मेरी जो स्पेशल क्लास है उसके लिए भी मैं लिंक्स वगैरह सेंड करती हूँ. सो डू नॉट मिस दिस आउट. ओके, अनदर थिंग इज अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन है बच्चा, बहुत अमेजिंग है. एंड अभी कल ही एक बहुत ही प्यारे बच्चे ने मेरे ही कोड से SHS 10 से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया है. बहुत ही अमेजिंग सब्सक्रिप्शन लिया है. And I am supporting him in English language. So this is not just a dialogue. I will do it for you people. I'll personally support you in English language and we will have lots of fun together. So I am telling you to go and buy Unacademy's subscription so that you can use my code there, and once you use my code I will be able to help you out and have a lots of fun with you while guiding you for English language. Okay, so make sure that you go and buy an Academy subscription as soon as possible, otherwise मेरा ऑफर खत्म हो जाएगा. Got it? और प्लस मेरे अलावा आपको बहुत सारे अमेजिंग धुरंधर टीचर्स मिलेंगे, फनी टीचर्स मिलेंगे जो आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट लेंगे, मस्ती करेंगे तुम्हारे साथ और तुम्हें साथ साथ बहुत सारा पढ़ाएंगे भी. तो टॉपर बनना है, मैम के साथ मस्ती करनी है, धुरंधर टीचर से पढ़ना है, सब कुछ करना है तो जल्दी से जाओ अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लो. 10% ऑफ आपको मिलेगा. साथ ही साथ आपको मैं इंग्लिश में जैसा कि मैंने बोला पर्सनली आई विल गाइड यू. गो फॉर 24 months, 36 months एंड 48 months. जल्दी से फटाफट से जाकर खरीद लीजिए एंड आई प्रॉमिस यू इट्स गोइंग टू बी एन एडवेंचर विद मी. ठीक है, जल्दी से जाओ खरीदो एंड लेट मी नो दैट यू बॉट इट विद माई कोड. आई नीड द स्क्रीनशॉट एज वेल. मुझे आप लोग टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट भी भेजोगे, डू नॉट फॉरगेट दैट. ठीक है, अगर आप लोग एक बार में नहीं खरीद सकते हो तो इंस्टॉलमेंट में ले लो यार, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है. 12 मंथ से ऊपर का अगर आप पैक ले रहे हो तो इंस्टॉलमेंट्स में आराम से ले सकते हो, महंगा भी नहीं है. आपको पता है 1000 से भी कम कॉस्ट है पर मंथ का. सो जस्ट गो एंड अप्लाई माई कोड SHS 10. जहाँ पर भी अनअकैडमी में कोड अप्लाने की बात होती है, आप वहाँ अप्लाई करने की बात होती है, SHS 10 डाल दो. और बच्चे ये वाला जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है, दिस इज गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल फॉर यू ऑल.
क्योंकि अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तुमको सही में लेजेंडरी बनाएगा। तुम्हें अपने लेजेंडरी टॉप एजुकेटर्स जो हैं पर्सनल मेंटोर की तरह मिलेंगे, जो तुम्हारी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इवन तुम्हारे पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और स्टडी प्लान करके देंगे तुम्हें, तुम्हारा वीकली रिपोर्ट कार्ड देंगे, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, समझ रहे हो, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, और सारे के सारे बाकी बेनिफिट्स अनअकैडमी के। प्लस साथ साथ मेरा कोड अप्लाई करोगे तो मैं भी आप लोगों को पर्सनली गाइड करूंगी और मस्ती करूंगी तुम लोगों के साथ, राइट। सो 10% ऑफ आप लोगों को मिलेगा मेरे कोड से, प्लस एक तरीके से मेरे साथ मस्ती करने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा। सो गो एंड बाय अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, SHS10 कोड लगाना है, जल्दी से जाकर खरीद लेनी है। गो फॉर 24 मंथ्स, 36 मंथ्स एंड 48 मंथ्स, ताकि एक बार में आपका 3-4 साल का ना पूरा एकदम चुकता हो जाए हिसाब, ठीक है। और कोई भी आपको डाउट आता है आपके मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब्जेक्ट में, तो जाके अनअकैडमी आपके आस्क डाउट फीचर से पूछिए कि भैया क्या आपका सॉल्यूशन है। आपको एक वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा कैसे यूज करना है, फोटो भेजनी है अनअकैडमी आप पे, इस डाउट पे फीचर पे क्लिक करके, और सब्जेक्ट चूज करना है अपने डाउट का, एंड दैट्स इट, आपके पास वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा। बस ध्यान रखना पिक्चर में कोई फालतू चीज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ प्रॉपर क्वेश्चन होना चाहिए, कंप्लीट क्वेश्चन होना चाहिए, मल्टीपल क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, एक ही क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए, और हैंड रिटन क्वेश्चन आप हमको नहीं भेजेंगे। प्लीज मेक श्योर कि आप फोटो ही भेजे, बुक से खींची हुई। Clear? Okay. Avnish Sai, yes, you're a 10th, but this session is for 9th class students. I am so sorry. All right, now let's come back to हमारा ये जो म्यूजिक वाला है, and हम लोग जो है questions. Okay, wait. Rano is saying, ma'am, is it anyhow possible कि अभिषेक सर 3:30 से session start कर दे और 4:30 end, so then you can take your session at 4:30 से 5:30, और 9th you can take 6:30 onwards. माई गॉड रानो, देखो 30 तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्चुअली में जो मैम का टाइम है वो 5 PM से है, तो टाइमिंग क्लैश हो जाएगा अगर मैं हाफ एन आवर समथिंग लूँगी तो, ठीक है। अगर वो करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो अगर मैं अपना टाइम चेंज करूँगी तो मुझे बाकी सारे टीचर्स का भी टाइम जो है चेंज करवाना पड़ेगा, और सारे टीचर्स ऑब्वियसली मेरे को बोलेंगे लात मार के कि भग बेटा निकलो इधर से पतली गली से। सो कांट रियली डू दैट। आई वॉज गोइंग फॉर 8 PM, क्योंकि मुझे लगा कि 8 बजे किसी का सेशन नहीं होगा, बट मनीषा मैम हैज स्टार्टेड टेकिंग सेशंस एट 8 PM, तो थोड़ा सा वो दिक्कत हो रहा है। अब या तो मैं सीधा 9 बजे जाऊँ, बट आई थिंक 9 PM काफ़ी लेट हो जाएगा तुम लोगों के लिए, और तुम लोग सपनों में अभी तो आते नहीं हो, दिन में रात को क्या ही आओगे। सो या दैट्स वाई इट्स बिकमिंग अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक फॉर मी। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा दिन का ना मतलब एक हाफ फ्री हो जाए, ताकि उस एक हाफ में मैं अपने सारे काम निपटा लूँ, वरना अभी ऐसे सब बिखरा रहता है मेरा, राइट, बिकॉज आई डोंट हैव लाइक अ प्रॉपर हाफ ऑफ द डे कि सारा काम मैं उसमें निपटा लूँ। सो या इट्स प्रॉब्लमैटिक फॉर मी ऑल्सो। हाँ, सुबह 5 बजे रानो, बिल्कुल क्यों नहीं सुबह 5 बजे हाँ एग्जैक्टली नारायण, सेम एग्जैक्ट सेम, पहली फुर्सत में निकलो बेटा अभी निकलो दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू से टू मी। अच्छा, ओके, लेट्स नाउ कम बैक टू द टॉपिक वी वर डिस्कसिंग। अब एक बार हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर ले, उसके बाद हम लोग टाइमिंग के ऊपर चर्चा करेंगे, वाद विवाद करेंगे, सब कुछ करेंगे बैठकर, ठीक है। लेट मी कम बैक टू दिस। हमारा जो एक बार सारे बच्चे प्लीज़ जो है ना ज़रा सा चुप हो जाओ, हम लोग इधर देखते हैं कि हमारे क्या क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स क्या क्या होंगे, ठीक है। लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस हियर। Okay, yeah, so this is our question. So this is, how old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? So obviously like Tanishka या Tanisha was asking this question, और ये क्वेश्चन सबसे पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर आप देखोगे कि तनीषा जो है वो कितने साल की, सॉरी एवलिन जो है वो कितने साल की थी, तो हम वापस से चलते हैं यहाँ पर कि वो कितने साल की थी, ठीक है। ओके, 90s, आर यू हेयर, आर यू पेइंग अटेंशन, ऑल द 9th क्लास स्टूडेंट्स। हेलो अभिलाषा, हेलो नैन्सी। 10th के भैया 10th के सेशन की टाइमिंग चेंज करने की मैं पूरी जद्दोजहद से कोशिश कर रही हूँ। तुम लोग रात को 9 बजे ठीक हो, लेकिन 9 बजे मेरा लेना पॉसिबल नहीं है सेशन, इट्स टू लेट फॉर मी ऑल्सो या। लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पर बोलते हैं
A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. Okay, so यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, looking younger than her 17 years, so this mostly मतलब largely यहाँ पर बताता है कि ये 17 years की है, बट क्योंकि यहाँ पर कह रहा है लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, तो ऐसा हो सकता है कि वो बस 17 साल की या तो अभी अभी हुई है या फिर बस होने वाली है. ठीक है, सो हम इसको 17 ईयर्स के अराउंड रख सकते हैं. लेट्स मेक इट 17 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली. अगर हमको एग्जैक्ट आंसर देना है 17 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली रख सकते हैं, या फिर यू नो अबाउट टू बी 17 ऑलमोस्ट, मतलब एकदम वर्ज पे है 17 के, हम ये कह सकते हैं. सो आई थिंक प्रॉपर 16 नहीं कहेंगे, एकदम यंग 16 नहीं कहेंगे, वी कैन से लेट 16 में है अपने, तो लेट 16 में है तो 17 के यू नो अर्ली है, तो वी कैन कॉल इट लाइक यू नो अर्ली 17s, बट दिस वुड बी लाइक मोर ऑफ अ डेट काइंड ऑफ अ थिंग, तो हम वो नहीं बोल सकते. तो इसलिए आप 17 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली कर सकते हो. अगर आपको तब भी कंफ्यूजन है तो आप इसके आगे 16 डाल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना चलता है. 16 to 17 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो. ठीक है, या नियर 17 ईयर्स एग्जैक्टली. सो आप 16.5 या 17.5 हैं, साढ़े क्या होता है, अच्छा 16.5 या 17.5, ओके ओके ओके, या गॉट इट. सो वी कैन से 16.25 उस तरीके से, बिकॉज आई थिंक वो 16.25 है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर वो 17 है, लेकिन थोड़ी सी यंग लगती है, तो आप कह सकते हो कि 17 की होने वाली है टाइप्स. ठीक है, तो नियर 17 ईयर्स, दिस इज परफेक्ट अवनीश साई, थैंक यू सो मच. या दिस इज व्हाट वी कैन से, नियर 17 ईयर्स. ओके ओके, हाँ 17 एग्जैक्टली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. When was her deafness first noticed? When was it confirmed? So is there any student who can answer this question? कि कब उसकी जो डेफनेस है वो सबसे पहले मतलब नोटिस करी गई थी और कब वो कंफर्म हुई थी. ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें स्टोरी बतानी स्टार्ट करते हैं ये लोग. तो यहाँ पर कहते हैं कि हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. So this would be the incident when they started to notice her hearing problem. 1 year हो गया still. That's amazing Avnish, that's amazing. Yes Pooja, exactly. 8 years जो है उसको बोला गया था कि मतलब उसका नाम बुला रहे थे, but she was not able to listen to her name because you know she just kept sitting and she did not even move, she did not even make a gesture or make a facial expression that she had heard her name. So she just kept herself completely untempted by the voice because she could not hear any voice. So this is why this would be the incident when her hearing impairment was first noticed, or her gradually growing hearing impairment was first noticed. And then let's see, but by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. So here it says her hearing was severely impaired, which means that her hearing was impaired, which clearly means that she had a hearing disability. She could not hear anymore. She could not hear anymore clearly. She had hearing impairment. So by the time she was 11 years old, she had hearing impairment, and it like people around her started to notice this when she was 8 years old. Okay, so you have to provide these two instances when you are going to talk about her hearing impairment. Her deafness was noticed when she was 8 years old. It was confirmed by the time she was 11. Exactly. But hello Rashi, good evening. But make this sure. And also when her academic performance was falling when she was 11. Yes, Harmeet. So Munchkins, please make sure that you do not just write a simple answer, you know, just one word answer to both these questions. I would appreciate it, and every teacher in the world would appreciate it, if you can talk about the circumstances in which her hearing impairment was discovered. Alright, so let's talk a little bit about the circumstances, and you can definitely give the exact age
at which her hearing impairment or hearing disability was discovered, right? So talk about both of these things, and then your answer would be a perfect pitch. Yeah, ignore that, Avnish. Hello, musical wizard. You're not new here. I saw you in my class yesterday or day before yesterday, maybe. Okay. All right. Next question. Ready? Who helped her to continue with music? What did he do and say? So this question again is very easy, and you guys can easily write 30 to 40 words about this. So can anybody tell me who helped her continue with music? Because if you remember, most of her teachers were very discouraging. They kept saying that you cannot play any instrument or you cannot be a part of music industry anymore because you cannot hear, and if you cannot hear, how are you going to create music? How are you going to produce music? Right? So they were all discouraging her, and they were all being like extremely practical, but they were not being motivational. His teacher, no Pooja, her teacher. This is a girl we're talking about, so her teacher. Exactly, Hermeet says. Ron Forbes. Yes, musical wizard, Ron Forbes. Yes, yes, yes. He advised him to sense music some other way. Exactly. So who helped her? Here you will give the name Ron Forbes. Then please go on to explaining who Ron Forbes was, right? So you're going to talk about his percussion skills. So he was a percussionist, okay? And what did he do and say? So how did he prep Evelyn for the music industry, notwithstanding her hearing disability? So what he did was he provided Evelyn with a lot of instruments, a lot of percussion instruments, and he asked her to start playing that with her hands. And she also went bare feet to the studio. She started getting close, physically close to her instruments, so that when she plays them, she can feel the beats, she can sense the music through her skin, she can sense the vibration of the music in her body. And that is how she's going to determine what note she is playing or what instrument she is playing. So for example, if you remember, she very clearly said that she distinguished between the lower drums and the taller drums because of this vibration technique that she learned from Ron Forbes. So Ron Forbes was a guy who did not just limit music to the hearing aspect of the music, or to the tune aspect of it. He also channeled music to Evelyn's body, and rest of the work Evelyn did. He just guided Evelyn, and Evelyn made it her life's mission to be a top-notch musician, almost like a virtuoso. So that is who Evelyn is in today's era. She's a virtuoso. It's okay, Pooja. Hello, Nikhil Suthar. Ron Forbes, who was a percussionist. Yes, exactly. Exactly, Narayan. But again, I would really, what is meant by upper waist and lower waist? अपर वेस्ट और लोअर वेस्ट नहीं होता हरमीत. वो कहती है कि जब वो टॉलर ड्रम्स बजाती है तो वो अपनी आई थिंक वेस्ट में फील कर सकती है उन वाइब्रेशंस को, और जब वो नीचे वाले लोअर ड्रम्स बजाती है तो वो अपने एब्डोमेन से नीचे के एरिया में, वेस्ट के नीचे के एरिया में, माने टांगों में जो है फील कर सकती है कि वाइब्रेशंस कौन सी है. सो दिस इज हाउ शी डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट्स. ऑलराइट. Right, so never limit your answer to just 2 to 3 lines. Try to elaborate your answer. Try to explain what is the essence of the answer. Like I just explained to you how Ron Forbes guided Evelyn to become her best version, and how he guided her to start sensing music through her body and through the vibrations of the instruments she was playing. So I think that works out the best way, and that's what is going to fetch you the most marks. Otherwise, teachers always deduct marks in English, saying that there is a scope of improvement, and let's not give them any scope, any plausible scope, I would say. Okay, next question. Name the various places and causes for which Evelyn performs. It's extremely easy. I mean, you can just say that she has an international schedule,
and she has a very hectic international schedule. She plays 1,000 instruments, and she performs in a hospital. She also performs at other places. She has a generous heart, and she does a lot of charity work. So a lot of free concerts. Okay, yeah, orchestra and concerts in hospitals. Exactly, prisons. Yep, she also takes classes for young musicians. Extremely amazing, Narayan. I think this is the perfect answer. In this question, there is nothing to explain. You just need to provide what is asked, and you just write down the names of the places she performs at, and that would be good to go. However, this would not be a question. This is not important when it comes to your examinations. Even this is not important. Yes, Narayan, exactly. Hospitals, concerts, free concerts, takes classes. Yes, she is a teacher as well. Now, this question is actually the most important question, and you should prepare this for your final examinations. Okay, this is your most important question from this chapter. How does Evelyn hear music? And if you see, the word limit is also very high, so this would be your long answer question. So first of all, you would need to describe that Evelyn does not hear music, right? She feels the music and she senses it. The music runs through her body, runs through her body. It pours into her body. Into her body, right? So vibrations help her to feel the music and the beats that she is playing, and it helps her distinguishes between the instruments and everything. Okay, so through different parts of her body. Yeah, exactly. Yeah, we can definitely talk about different parts of her body as well. Do you remember which parts? So, do you remember which parts exactly? I think she explains this here. Okay. Right, so she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. So, when she is playing a xylophone, she can sense the sound into her fingertips. Right, by leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. And on a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. So these are some of the things that you're going to add to this answer. Okay, it is extremely important. She feels the music through every part of her body. It tingles in the skin, cheekbones, and even in my hair. So this is like music is a part of her. Definitely include this line that music is a part of her. Okay, it's not something that is separated from her. It feels almost like the existence is symbiotic, and it feels as if they both coexist, right, in the same body. I literally felt that when I was reading this and I was teaching this to you, that they both coexist in the same body. So music and Evelyn exist in the same body, and you see, she can feel music in every part of her body, and it is not just in her heart or in her mind. It's also in her cheekbones, in her skin, in her hair, in her fingertips, in her legs, in her, into her whole body. It's flowing through her whole body. So I think definitely you should include the fact that music is a part of her, and it's almost like it coexists with her in her body. Okay, use that. It's going to be very important in your answer, and it's going to bring the examiner to your answer, and it's going to make them give you more marks. Okay, so use this line that music is a part of her. Music is a part of her.
to the extent that it seems as if music coexists with Evelyn's soul in her body. Evelyn can feel the music in her cheekbones, in her hair, and all the other places, and it also tingles her skin. It also tingles her skin. So I think you're going to make a very amazing answer, a very engaging answer to this question if you include all the things that I've written here, and it would be a very poetic answer as well, and the examiner would absolutely appreciate that. Ranu, very funny, yeah. You're asking me to jeopardize another teacher's class. I can't do that. That is not exactly team spirit, right? Okay. She cherished music like an immense lover. Wow, Harmeet, I love that. Yes, definitely you guys can write that as well. That she cherished music like it was her lover. Yeah, definitely. Because, we have not been told anything about her personal life. Six p.m. 9th and 7 p.m. 10th. Huh. Okay, Rano. See, but the point is, Rano, see, if I have a class at 6 p.m., then I would have to wrap it up pretty quickly, and then students will not get a chance to talk to me. And then if I have a class at 7 p.m., I'll have to see, it will not be exactly 2 hours then. Then at 7 p.m. I will have a class, and then at 8 p.m. I think Manisha ma'am will have a class. So I'll have to wrap it up before 8 p.m. Then students will bicker that I don't give them time and I don't talk to them and stuff. Give me time. I am going to sort this out. I'm trying my level best to sort this out. 10th का 6 p.m. कर दो, 9th का 3 p.m. ये सही है. Okay, so how many 9 students do I have in my session right now? Are you guys okay with taking your classes at 3 p.m.? Tell me. Okay, so yeah, I think we are done with the question answers. Pooja says 6th is best for 9th. Yeah, Rano, see, 9 students are kind of negligible. 10 students आके मजे लेते हैं. Narayan, you're a 9th or what? You're 9th or 10th? I really don't know. Okay. Give me some time. Let me try to sort this out, okay? All right, fine. So, Rano, true that. I know that.
but I still cannot really change that just because 10 students come. No, I have to keep two timings, and I have to keep them separately. But I'm trying to sort this out. I'm trying to get 8 p.m. slot if I can. See if Manisha ma'am takes session only 2 days in a week at 8 p.m., then maybe we can work this thing out. I'm still talking to her. Okay, never mind. So any 90, any doubt? Do you guys have any doubt? Let me know, and if there is no doubt, then I will end the session and then I will leave. Okay? And then do not forget, tomorrow is Thursday. Tomorrow we have grammar sessions. Tomorrow we are going to do grammar. Okay? Direct, indirect speech. Yes, I'm finally teaching this. Share this with everyone. Okay? Direct, indirect speech. 3 p.m., 6 p.m. Ranu, yeah, it was happening before because Manisha ma'am was busy because of something. Now I think she comes live. Kind of, Narayan. Yeah, Abha, I can see that Miss Abha is not here. So ma'am, at what age she became fully deaf? Pooja, अभी तो हमने आंसर किया था ये. Oh my God, we just answered this. See, chapter के accordingly वो 11 पर बनी थी. ठीक है, ये रहा. Was severely impaired. Her hearing was severely impaired. So फुल्ली डेफ वाला तो कोई हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 11 पर कंफर्म हो गया था कि भैया वो मतलब डेफ है टाइप्स. ठीक है. Oh, Rano, I love you too, baby. Yeah, I know it's not. Oh, but yeah, that happens. अब टाइमिंग का टॉपिक चल रहा है. मैं तो सोच रही थी कि 1 पीएम और 3 पीएम सेशन ले लेते हैं, बात ही खत्म करते हैं, दिन में फ्री हो जाएंगे, है ना? व्हाट यू गाइस थिंक? 1 पीएम 3 पीएम. क्या अंकित, व्हाट? तो रानो, अगर 7 से 1:35 तक स्कूल चलता है तो 3 पीएम वाला क्लास क्यों नहीं अटेंड कर पाते हो आप? अब 8 पीएम पे मनीषा मैम क्लास ले रही हैं. आर यू कॉमेडी में? नहीं, मैं ये बस सोच रही थी कि 1 पीएम ले सकते हैं, बट या आई नो दैट वुड नॉट बी सूटेबल फॉर एनीबॉडी, सो हटा देते हैं भैया. ठीक है, मारो मत मेरे को यार, हटा रही हूँ मैं. मारो मुझे, मारो. नहीं करने वाले हम लोग, नहीं करने वाले. वी नॉट डूइंग दिस. 9 पीएम. आर 10th क्लास स्टूडेंट्स ओके विद 9 पीएम? आर यू गाइज ओके विद 9 पीएम? टेल मी. बहुत लेट हो जाएगा, बट इफ यू गाइज आर ओके विद इट देन आई विल डू इट. ऑल द 10th ही टेल मी. रानो, मेरी क्लास में तो तुम चिल करके बैठ सकती हो ना. मेरी क्लास में तो कोई जान लेने की बात ही नहीं. यू कैन जस्ट चिल एंड लिसन टू मी एंड लाफ, राइट? ये देखो, भविन को 8:30 बजे टीएम केओसी आता है. वेरी फनी भविन. 1 पीएम घर पर होंगे जब ही तो सेशन अटेंड करेंगे, राइट? अपना काम बनता भाड़. आप बस सही बोल रहे हो हैं. हाँ, तो उस टाइम पर वही तो दिक्कत है अंकित, कि इतनी देर क्लास होती थी, बच्चे कहते थे कि मैम इतनी देर हम लोग क्लास नहीं अटेंड कर सकते. तो 8 पीएम पर बच्चे उस टाइम कंफर्टेबल नहीं थे. सो आई हैड टू चेंज इट फ्रॉम 8 पीएम टू 7 पीएम, एंड देन अभी रिसेंटली आई चेंज इट फ्रॉम 7 पीएम टू 6 पीएम.
हम लोगों का टाइमिंग ही नहीं बैठ रहा है, और अब हम लोग वापस से 8 PM पर घूम कर आना चाह रहे हैं। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या चल क्या रहा है। नाइन्थ का क्या टाइम है? नाइन्थ का तो बच्चे 6 PM है अभिलाषा। नाइन्थ इज 6 PM। Abha, you are giving me a good point, but the point here is कि अलाउ नहीं होता है ऐसे सेम टाइम पर लेना ना क्लास. That is not kind of allowed. So you guys tell me if you want 9 PM वाला thing. But guys 9 PM बहुत लेट हो जाएगा, बहुत ही लेट हो जाएगा. अंकित पूछा था मैंने उनसे, अभी तो मेरे पास अभी नहीं कंफर्म हुआ है ये चीज़. See, 9th का टाइमिंग is 6 PM. The whole लफड़ा is 10th का टाइम. रानो, I understand. हाँ बस समझ रही हूँ मैं तुम क्या कहना चाह रही हो. ईस्ट एंड वेस्ट 9th टाइम इज बेस्ट. हाँ, नारायण इज हैप्पी. अच्छा, सुबह सुबह बेस्ट है. हाँ, मर ना जाऊं मैं. जरूर, क्यों नहीं. 4 AM 5 AM कैसे कैसे तुम लोग मेरे को वो देते हो यार. 5 PM पर तो मनीषा मैम ऑलरेडी सेशन ले रही हैं. अबा, शी इज ऑलरेडी टेकिंग इट एट 5 PM. Why don't you guys look at the timetable? Yeah. See, अच्छा अंकित, ज़रूर. हाँ आभा, ज़रूर, क्यों नहीं, ज़रूर ज़रूर. देखो, इस कॉन्वर्सेशन का तुम लोगों के साथ मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. आई विल हैव टू टॉक टू द एजुकेटर्स, और फिर ही कुछ कंफर्म या कुछ समझ आ पाएगा मेरे को. अंकित, हर ही चैनल पर हर टाइम पर क्लैश ही होता है. दैट्स जस्ट एवरी चैनल फॉर यू. हाँ आभा, यही मेरा अभी जो है जुगाड़ चल रहा है कि मे बी मनीषा मैम विल नॉट टेक 8 PM सेशंस डेली, so maybe the other days I can take that 8 PM session. That's amazing, Pooja. Thank you so much. I feel very blessed that you're saying that. Thank you. Right, Narayan ji. See, I don't think I'm going to change 9th class session क्योंकि 6 PM is like okay, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ कि जाओ तुम बात करो, बिल्कुल गो. टॉक टू देम. इट्स वेरी कंफ्यूजिंग. ओके, द टाइमिंग ये बहुत कंफ्यूजिंग टाइमिंग है. हाँ, तुम स्केड्यूल कर लो, बिल्कुल अंकित. या 6 AM अब फाइनल करो हैं रानो. कुछ भी नहीं भैया, 3 PM 5 AM या 6 AM इसमें से कुछ भी फाइनल नहीं होने वाला है. आई एम गोइंग टू चेंज 3 PM सम हाउ. आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू चेंज इट, क्योंकि मेरे लिए भी कंफर्टेबल नहीं है. बट मुझे थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस बार. सो या इट विल टेक लाइक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. जी अंकित जी, आप तो भगवान है यार, अंतर्यामी हो आप. सुबह 10 बजे ले लो. सुबह 10 बजे तो बच्चे अटेंड नहीं कर पाएंगे ना. 12 बजे क्या कहते हो तुम लोग? व्हाट अबाउट 12 PM हैं? नहीं ले पाओगे ना. 12 बजे भी नहीं ले पाएंगे बच्चे.
हाँ बस सही कह रहे हो, एक ना नया टाइम, ये 1 घंटा बढ़ा दो यार, ये 24 घंटे का दिन ना 25 घंटे का कर दो, उस 1 घंटा हम एक्स्ट्रा सो लेंगे सब, मेरे बच्चे और मैं, क्लास से मिल के ना। 3 PM के बाद लो। रानू आई थिंक फिलहाल के लिए उन्होंने मुझे कुछ कंफर्म नहीं किया, अभी जो मैंने उनका शेड्यूल देखा था, उनकी 8 PM वाली क्लास सिर्फ कल थी और आज थी, बट मे बी शी विल प्लान दैट, क्योंकि उन्होंने वो टाइम स्लॉट ले लिया है ऑलरेडी। जी बार्गेनिंग तो हर जगह होती है। आबा इज लाइक आबा मी टू। ओके, ये देखो सभी खा, भाई मेंटी मेंटी तो ऐसे बोलते हो तुम लोग तो, बच्चों का ना मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों का पॉलिटिकल स्लोगन इज मेंटी मेंटी, मतलब मेंटी के नाम से मैं पार्टी खड़ी कर दूं ना, तुम लोग वो पार्टी जिता दो। स्टूडेंट यूनियन। कुछ उससे 25 बार से कौन सा सेशन होगा उससे भी तो। सही बोला अंकित। Abha, I did tell her, but she has her own problems and stuff, so I think मेरे को तारक शाह सर से जुगाड़ लगाना पड़ेगा, अगर लग सकता है जुगाड़ तो, in that case only. रानू यही मैं सोच रही हूँ, तुमने जो बोला है यही चीज़ मैं उनसे डिस्कस कर रही हूँ, कि अगर वो मेरे को एक बार कंफर्म कर दें तो फिर मैं उस हिसाब से जो है स्केड्यूल बना लूँ या चेंज कर दूँ। सुबह 6 to 7 विद चाय, हाँ भाविन क्यों नहीं, यही तो काम है, सुबह सुबह ये चाय करेंगे हम लोग। आभा, तारक शाह सर का ऑलरेडी सेशन है 7 बजे। हाँ हाँ, वट एवर सेशंस आई एम गोइंग टू टेक, इट्स गोइंग टू बी आफ्टर 3 PM। मैं पूरा जुगाड़ लगाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि भैया 3 PM से कुछ हो जाए, बट इट डिपेंड्स ऑन द टीचर्स अल्टीमेटली, अगर वो लोग टाइम स्लॉट मुझे दे देते हैं तो ही हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली exactly, अंकित खुद तो उठूँ मैं, और क्यों उठूँ मैं। अच्छा नारायण वो नहीं करेंगे। बाय पूजा, बाय बाय। हेलो सृष्टि। हाँ नारायण एकदम बढ़िया का, 2:30 बजे तुम खुद उठना, खुद यूट्यूब पे आना, अपनी क्लास अटेंड करना खुद ही और चले जाना, मैं तो क्लास नहीं लूंगी 2:30 बजे रात के। रानू वो तो हम सबकी क्लास में ही इतने ही होते हैं, सो नो ऑफेंस, नन टेकन बेटा। कोई नहीं ले रहा है, डोंट वरी। सभी को है अंकित, सभी को है, डोंट वरी। इस दुनिया में आए हो तो थोड़ा सोलो, थोड़ा सा सोलो और थोड़ा और सोलो, या दैट्स माय मोटो ऑफ लाइफ। आभा तुमको पता है कि तारक शाह सर का दूसरा सेशन कितने बजे है? uh, क्योंकि तारक शाह सर 2 सेशन लेते हैं, आई डोंट रिमेम्बर, उनके 2 सेशन होते हैं, एक 7 बजे है, दूसरा कितने बजे है? Yeah, Ranu, that happens. Like, it's still, like, it's the same for, like, this channel somehow. अब मुझे भी अपनी क्लास के अलावा कुछ नहीं पता। ओके, कोई इशू नहीं है, हम लोग बच्चे इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, इतना परेशान मत हो। आई विल ट्राई कि कहीं से कुछ हो जाए। Ankit, I really can't do that. Yeah, I'm not that kind of a person. I can't really do that. ए नारायण बस करो यार, प्रभु नारायण। हाँ आई एम ट्राइंग। मैं सोच रही हूँ कि कोई एक हाफ फ्री हो जाए तो दैट वन हाफ वुड बी प्रोडक्टिव फॉर मी, बिकॉज अभी पूरा दिन मेरा पीपीटी बनाने में और क्लास लेने में, फिर दोबारा पीपीटी बनाने में, सो लाइक द होल डे इज लाइक काइंड ऑफ बिजी एंड आई एम नॉट एबल टू इंडल्ज इन द अदर थिंग्स।
So it would be better if this one half is for you guys and the other half is for me and the other things. So I am trying, but I am not sure क्योंकि हर एक टीचर का अपना अपना रीज़न है. So या आभा पटा लो यार. मेरी जगह तुम कर लो प्लीज. इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू डू देन. रानो इज लाइक बाकी टीचर से हाफ हाफ ले लो भैया. सही बार्गेनिंग करा लो तुम लोग की. सर जी आधा घंटा. दिस इज लाइक कि मतलब स्कूल में ना इंग्लिश वाली टीचर से मैथ्स वाले सर मांगते हैं कि मैम अपना एक क्लास दे दो, हमको एक क्लास दे दो. यहाँ पे मैं मैथ्स वाले सर या बाकी टीचर से, फिजिक्स या साइंस वाले टीचर से मांगने जाऊंगी कि सर एक क्लास दे दो सर जी प्लीज, थोड़ा सा दे दो, थोड़ा थोड़ा. है ना. अंकित इज लाइक मेरे को जाने का, बाय. हो गया मेरा डिस्कशन. यस नारायण, यू कैन गो. एनीबडी हु वांट्स टू लीव कैन लीव. या इट्स ओके, चिल. आधा घंटा उधार दे दो. हमका उधार दे दो बाबा, हमका थोड़ा सा उधार दे दो. आधा घंटा बच, ज्यादा नहीं मांगते हम. आधा घंटा दे दो, दे दो, बस दे दो. यही कराओगे मेरे से. अच्छा, जरूर नारायण जी. ओके, गॉट इट. जिंदगी में बहुत दिक्कत है. सही बोला रानू, बहुत दिक्कत है. जो हम चाहते हैं कभी होता ही नहीं है. ये कैसी जिंदगी है रे बाबा. आवा, ये तो कभी टेनेट मूवी वाला सीन हो गया. क्योंकि टेनेट मूवी में भी वो लोग जो है अपना एकदम टाइम ऐसे चेंज, मतलब आगे से पीछे कर लेते हैं ना. तो हम लोग यहाँ पे पीछे, मतलब हम भी उल्टा कर लेते हैं कि भैया मैं 8 से 7 रख लेती हूँ जरूर. अच्छा. नहीं खत्म होता है भाई, दुख नहीं खत्म होता है. अच्छा ठीक है यार. कितना भी है, ब्लैक एंड व्हाइट आ रही है. हाँ तो ब्लैक एंड व्हाइट ही आएगी क्योंकि पीपीटी पीछे व्हाइट ही है बाबा. ओके गाइज, सो आई विल लीव नाउ. अब डिस्कशन हो गया है. अब मैं जाकर ज़रा बात करती हूँ टीचर से. यार थोड़ा कोशिश करते हैं हम लोग तुम्हारे लिए, खुद के लिए भी, है ना. लेट्स ट्राई. रानू तुम तो कहते ही ईविल बनाओगी मेरे को, है ना. अच्छा ठीक है आभा, चलो. आई विल गिव यू 5 minutes मोर. ठीक है, बट आफ्टर 5 minutes आई विल लीव बिकॉज आई हैव टू टॉक टू अदर टीचर्स ऑल्सो ना. थोड़ा तुम लोगों ने इतना रोना मचाया हुआ है मेरे सर पे कि ये तुम्हारा रोला लेके अब मुझे आगे जाना पड़ेगा. अच्छा रो लू थोड़ा. ठीक है, दे दो हमको. मानचूले का है हम, दे दो हमको, है. हेलो यंशिका, हाय. सो या यही चल रहा है. आभा तुम यहाँ कैसे. यंशिका, आभा आपको हर जगह मिलेगी. एवरीवेयर. आभा इज लाइक भगवान. ये हर जगह है, कण कण में बसी हुई है आभा. रानो, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट. हंसा हंसा के मुंह दर्द कर दिया तुम लोगों ने मेरा. आभा सर्वत्र है. सर्वत्र कुछ नहीं होता यार. सर्वर्य है, सर्वोपरि है. सर्वोपरि होता है. सर्वत्र क्या होता है. सर्वत्र भी होता है कुछ. यार अंकित, आए तो आई एम कंफर्टेबल विद 8 PM. हाँ यार रानो, प्लीज ट्राई. ये देखो यंशिका कह रही है आभा मुझे आशीर्वाद दो. किस बात का आशीर्वाद चाहिए यंशिका तुमको आभा से. ये हम हैं, ये हमारी क्लास है और यहाँ खौफ चल रहा है. नारायण, कोई खौफ नहीं है. सबका अपना अपना ज़रूरत है. तो मैं उनकी ज़रूरत समझ रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. सर्वत्र होता है संस्कृत में. अच्छा ठीक है बालिके, समझ गए. थैंक यू माताश्री हमको ये समझाने के लिए. मैम की संस्कृत कमजोर नहीं, बहुत कमजोर, मतलब अति कमजोर.
क्या चाहिए बोलो, बेटा नहीं होता। अब यहाँ मैं जीत गई, सॉरी। अब तुम बालिका, यूर बैक अगेन टू बालिका, cause इट्स वत्स। क्या चाहिए तुमको, वत्स, ये होता है। हम्म। हाँ अंकित, बिल्कुल, आप तो डॉन हैं, आप देखेंगे तो ही तो टाइमिंग का इशू सॉल्व होगा, वरना तो नहीं होगा। कि हम जीवन में तरक्की करें, सफ्ता मिले। अब ये सफ्ता नहीं पता मुझे क्या होता है, भैया कहाँ से लाते हो ये भाषा तुम? जी हाँ, वत्स। वत्स का फीमेल क्या? Abha, it's Vats only. There is no Vatsa. It's just Vats. Simple Vats. It's gender neutral. Okay. शिवम, ये देखो, प्लीज स्टार्ट 11। कैसे करते हो तुम लोग ये, है कैसे करते हो? सफलता मैम, सॉरी, हाँ सफलता है, नो यंशिका, ओके। तरक्की करे, सफलता मिले। आभा अपना आशीर्वाद दे दीजिए यंशिका जी को, उनको सफलता करनी है जिंदगी में और तरक्की करनी है जिंदगी में। ओके। हाँ, मुंह खोल के हंस लेते हो सब लोग बस। दैट्स गुड, यू शुड लाफ इन माई क्लास, यू शुड हैव फन। चलो भाई, हो गई पढ़ाई वढ़ाई, है ना, मस्ती भी हो गई। आई विल गो नाउ। टेन के बाद मैम भूल गई, व्हाट शुभू? आबा यू कैन जस्ट राइट वर्ड्स, यू नो, वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट लाइक रामायणा। मैम रुक जाओ, यंशिका तुम भी आभा की लाइन में आ गई हो, कैसे, क्यों? यार एक सेकंड, सर्वत्र होता है, ये सर्वथा होता है, क्योंकि सर्वथा मेरे को पता है, सर्वथा इज लाइक हमेशा थे, राइट? बिल्कुल अंकित। रानो, अभी तो मतलब मैंने 10th को न्यू सेशन से पढ़ाना स्टार्ट किया है, अगर वो 11th का है तो ऐसे पॉसिबल नहीं है बच्चा, ये जो वट एवर यूर सेइंग इज नॉट पॉसिबल। सर्वत्र इज सब जगह एंड सर्वथा इज डिफरेंट, सर्वथा इज लाइक हमेशा, आई नो दैट। ये अंशिका, आप लेट आते हो, मैं पूरे सेशन के टाइम पे रुकती हूँ और लेती हूँ, ठीक है? सो यू स्टार्ट कमिंग इन सेशंस। यार स्टॉप इट यार, तुम सब लोग तो एकदम ना मतलब फनी हो गए हो मेरे साथ रह रहे के, है ना? संगति का असर पड़ गया तुम लोगों को। जरूर, क्यों नहीं, यही तो काम बचा है। जाओ सब लोग जाओ, सही में बटर वटर लगाओ थोड़ा। मैं बातचीत करती हूँ, मैं चलती हूँ, ठीक है? बाय बाय, आई विल सी यू गाइस टुमारो एट 3 PM, ऑल द 10th एंड 6 PM। कल बच्चे ग्रामर है, भूलना मत, कल हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे। So tomorrow we have grammar, do not forget it, okay? So bye bye, good night, tata, take care.